Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on Aristotle as a critic, part 2. So in the last class we have already talked about uh, Aristotle's theory of tragedy and also the six elements of tragedy, and we have also completed Plato in that particular class, right? So in today's class, we will complete Aristotle's Poetics. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. Good evening, Manju. Good evening, Papri. Good evening, Jitu. Welcome. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal state examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. Good evening, Neetu. Welcome. These are the timings of your classes Monday to Friday at 8:30 p.m. Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Okay, so okay, so today we will talk about another segment of poetics, that is comparison between poetry and philosophy. So in this particular segment, Aristotle has gone against his teacher Plato. ठीक है, तो प्लेटो ने क्या बताया था कि पोएट्स आर नॉट गुड, पोएट्स मस्ट बी बैनिश्ड फ्रॉम द रिपब्लिक, बट एरिस्टोटल इज हियर प्रूविंग विथ लॉजिक दैट पोएट्री इज बेटर देन फिलोसफी. ओके, पोएट्री इज बेटर देन फिलोसफी. तो ये कंपैरिजन क्या है ये हम देखते हैं. तो एरिस्टोटल इज सेइंग दैट why philosophy and poetry is better than philosophy. तो वो ये कह रहा है कि इन हिस्टोरिकल नैरेटिव इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स, इन हिस्टोरिकल नैरेटिव इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स आर narrated in a chronological order and thus the casual connection between them are obscured. It deals with past and very much contextual and singular representation of matter of fact. मतलब गुड इवनिंग राजकिशोर, गुड इवनिंग मयांक, गुड इवनिंग चेरी, वेलकम. ओके, तो वो क्या बता रहे हैं एरिस्टोटल कि व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, ठीक है, तो फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री दोनों से ही पोएट्री सुपीरियर है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, राइट? एंड इन हिस्ट्री वी जस्ट फाइंड सम information and facts which are narrated in chronological order. So chronology is very important when we read history, any kind of history, right? We must have proper dates, proper years, and we need to and we need to remember it chronologically. So it talks about the past events and this is very much contextual. ठीक है, पास्ट में जो हुआ था उसी के बारे में बताए जाते हैं. तो इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट. There is nothing else. History is the representation of the past details. Okay. अब poetry में क्या है? In poetry, the poet focuses on what ought to happen. History doesn't talk about future. Okay, history narrates the past, and through that past, we can gather a vision that in future what is going to happen. That is why history is very much important in our life. We need to know the history so that we can assume the future. ठीक है, बट हिस्ट्री का फोकस मेनली रहता है पास्ट इवेंट्स के. बट पोएट्री में क्या होता है? इन पोएट्री द पोएट फोकसेस ऑन व्हाट ऑट टू हैपन. मतलब एक विजन देता है पोएट. इन फ्यूचर क्या होने जा रहे हैं, दैट इज अ विजन और अ क्लियर कट इमेजिनेशन, और यू मे से अ लॉजिकल डिस्क्रिप्शन दैट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर. ओके, तो पोएट्री में ये चीज होता है. द कैरेक्टर्स इन पोएट्री आर बेटर देन एवरेज मेन एंड वीमेन, symbolizing the possibilities of human nature. Yes, normal human beings की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है. For example, Prufrock. Prufrock is a classic representative of modern man, right? So Prufrock is not like
us, or not like any other average people, but Prufrock has a dilemma. Prufrock has a kind of doppelganger issue in his life, in his identity. तो थोड़ा सा प्रूफरॉक अलग है बाकी कैरेक्टर से, बट यस ही रिप्रेजेंट्स मॉडर्न मैन, ही इज ऑल्सो कॉन्टेक्चुअलाइज्ड इन द मॉडर्न सोसाइटी. And also through Prufrock we can understand that modern age का क्या उस time में condition था, and we can also assume that what postmodern age will be in that perspective, right? So poetry में यही चीज होता है. Good evening Jyoti, welcome. तो पोएट्री में यही चीज होता है कि the poet focuses on what ought to happen. Okay. नेक्स्ट आते हैं क्या, पोएट्री ट्रांसफॉर्म्स द फैक्ट्स ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स बाय एलिमिनेटिंग द इररिलेवेंट मैटर्स. यस, दैट इज द थिंग व्हिच स्क्लोवस्की, विक्टर स्क्लोवस्की टॉक्ड अबाउट, डीफेमिलियराइजेशन. ऑलमोस्ट सेम चीज है. डीफेमिलियराइजेशन या फिर कोल्ड्रिच ने जो कहा था सेकेंडरी इमेजिनेशन, ऑलमोस्ट उसी के साथ ये कनेक्टेड है. मतलब डीफेमिलियराइजेशन में क्या कॉन्सेप्ट था कि वट एवर द फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स आर इन द पोएट्री, द पोएट प्रेजेंट्स दोज फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स इन एन अनफेमिलियर वे. तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि पोएट्री हैज सम यूनिवर्सल ट्रूथ्स. ऑब्वियसली पोएट्री हैज द बेस एंड द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स, but poetry presents it in a different way. It eliminates the irrelevant details and focuses only on the central message. That is why poetry is precise. Poetry is precise rather than novels and drama. ठीक है, and that is why it is also said that writing poetry is much difficult than writing novels or short stories or essays, because poetry में बहुत कम words में आपको ज्यादा चीजें बताना होता है. स्पेशली आप याद करो सोनेट को. सोनेट में देखो ओनली 14 लाइन्स आपके पास है, एंड यू हैव चोजन अ बिग थिंग, बट यू हैव टू सम इट अप थ्रू दिस 14 लाइन्स. So in that case you have to eliminate the irrelevant details, you need to filter your thought, you need to organize your thought, right? Good evening Shivcharan, welcome. Austerity, right? So poetry transforms this thing, and that is why poetry is superior. According to Aristotle, history is one dimensional, restricted to particular happenings, but poetry is universal. ठीक है, यहीं पर वो बता रहे हैं एज अ रिप्लाई टू प्लेटोज थ्योरी ऑफ पोएट्री. प्लेटो ने ये बताया था कि पोएट्री इज मच लोअर देन अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स लाइक फिलोसफी, and Plato himself was a philosopher, so he kept philosophy at a very highest level. But Aristotle is denying the fact. Aristotle is saying that no, poetry is the highest form of art because poetry has these qualities. Poetry can be multidimensional. हिस्ट्री का तो एक ही डायमेंशन है. हिस्ट्री जब आप इंटरप्रेट करते हो, ऑलमोस्ट एक ही लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है, एंड इन एवरी हिस्ट्री बुक्स यू विल फाइंड ऑलमोस्ट द सेम फैक्ट. But if you are reading analysis of Prufrock and you are searching over internet, you will get a lot of articles which have analyzed Prufrock from various perspectives, and all the perspectives are correct. All the perspectives, all the theories which they have used, all of these are correct because they have logically proved it. Right? No, not only the theory of modernization is there in Prufrock. You can apply any theory. You can apply deconstruction. You can apply existentialism. तो ये पोएट्री में ही पॉसिबल है, हिस्ट्री में ये पॉसिबल नहीं. हिस्ट्री या फिलोसॉफी. यस यस, राइट की. तो एपिग्रामेटिक इन एक्सप्रेशन, एब्सोल्युटली. गुड इवनिंग एकतबा, वेलकम. तो ये उन्होंने बताया ना. तो ये था पोएट्री एंड फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री के बारे में. नाउ अनदर पार्ट है हाउ टू पोर्ट्रे कैरेक्टर्स. एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टर कैसे होना, ठीक है. तो इसके लिए एरिस्टोटल कह रहा है इन चैप्टर 15 ऑफ पोएटिक्स, एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट 4 मेजर पॉइंट्स व्हाइल क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक कैरेक्टर. उन्होंने 4 पॉइंट्स बताया. क्या क्या 4 पॉइंट्स है? अगेन इन ड्रामा. ओके, ध्यान देना, वो ड्रामा में बात कर रहे हैं, स्पेशली इन ट्रेजेडी. इन ट्रेजेडी और इन एनी फॉर्म ऑफ ड्रामा, नॉट ओनली ट्रेजेडी, इन एनी फॉर्म ऑफ ड्रामा. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द कैरेक्टर्स मस्ट बी गुड. ओके, नाउ द टर्म गुड इज वेरी मच कंट्रोवर्शियल, ठीक है, बिकॉज गुड इज अ वेरी एम्बिवेलेंट टर्म. इससे कई कुछ चीजें आप मीन कर सकते हो. गुड मीन्स वर्चुअस, गुड मीन्स ऑनेस्ट.
तो क्या है बेसिकली गुड, मतलब हर कैरेक्टर्स अगर गुड होगा तो विलेन कौन होगा, राइट? तो इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी है कि एरिस्टोटल ने क्या बताने की कोशिश कर रहे थे यूजिंग द वर्ड गुड। तो एफ एल लूकस ने ये बताया था कि गुड मीन्स नोबल, and some critics also believe that good means magnificent or dramatically effective. Yes. So good here doesn't mean in the sense we apply good or bad, good girl, bad girl. तो वो टर्म में ये नहीं है. Good doesn't mean always virtuous, but good means that he or she must have some nobility in him or her, and also her appearance or his appearance will be magnificent. तो एक मतलब ग्रैंड चीजें होना है कैरेक्टर, स्पेशली इन ट्रेजेडी. Okay, so here good means that magnificence or grand or something that is very effective, that will impress the audience, impressive in that sense. And also there will be some nobility also in his character. एक good background होना है, good lineage होना है, ठीक है? तो ये बात है about the characters. For the first point, characters must be good. Second point क्या है? Characters must have appropriateness. What does that mean? It means that their behavior must be true to social status. Absolutely. Characters के जो भी background आप बता रही हो, characters must behave accordingly his or her social status. Otherwise क्या होगा? Otherwise the characters appears to be out of context. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा. तो ये तो गुड ट्रेजेडी का या फिर गुड ड्रामा का एग्जाम्पल नहीं है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैरेक्टर. तो इफ यू वांट टू कॉन्टेक्चुअलाइज द कैरेक्टर यू मस्ट ब्रिंग appropriateness in him. Appropriateness means that he or she must behave according to the norms and not only norms but according to the status of society. ठीक है, उस टाइम में सोसाइटी जैसा है कैरेक्टर्स को वैसे ही होना. ठीक है. अच्छा, थर्ड पॉइंट है likeness must be there. There is a kind of likeness. Now likeness doesn't mean that you like the character. Okay, likeness का क्या मतलब है? Similarity. Aristotle himself does not explain this phrase. तो इसका कई सारे मीनिंग है. Maybe it means likeness to reality. Yes, what I have just said. Likeness means similarity, which means that the characters must be taken and modified from common life so that we can associate themselves with us. Otherwise the tragic emotion of pity and fear will become irrelevant. That is likeness. The characters must be chosen from common life. The particular character traits, और जिसको हम theoretical भाषा में कहते हैं archetypes. तो जो भी archetypes आप चूज करते हो वो आपको सोसाइटी से ही लेना है. You cannot create some character who has no existence in society. That is not to be done. So likeness means that each and every character must be associated with common life so that we can relate our life with him or her. Okay. For example, Macbeth is a king. So we have all seen or read about kings or queens. So they are valid existences in society, right? So that is why we can associate or we can imagine that okay, king means there is something grand, there is something royal, and Macbeth has that glamour. Macbeth is also a soldier. First of all, Macbeth is a soldier, then he becomes a king. तो देखो, soldier, king, ये सभी सोसाइटी में है, प्रेजेंट में है, right? We know that they exist in society. ठीक है, तो ऐसे ही कैरेक्टर्स आपको लेना है, बट यू मस्ट मॉडिफाई इट. तो कैरेक्टर को लेना है तो कॉमन लाइफ से, दैट इज ट्रू, बट द कैरेक्टर शुड नॉट बी एवरेज. ट्रेजिक कैरेक्टर में क्या होना है? एक मैग्निफिशियंस होना है. तो आर्किटाइप आप वहां से चूज करो सोसाइटी से, बट यू नीड टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन और द प्लॉट ऑफ द स्टोरी. Yes, so that the audience can relate to the characters and don't seem to them alien. Absolutely, absolutely. That is like this. अच्छा, last point है, the characters must be consistent. ठीक है. The change of fortune presented must not be the spectacle of a virtuous man brought from prosperity to adversity. Yes, yes, Chin. वर्चुअस मैन ऐसा नहीं दिखाना, इसमें तो पोएटिक जस्टिस मेंटेन नहीं हो रहा.
You should maintain poetic justice. Yes, absolutely true. So हाँ जो मैं बता रही थी, द कैरेक्टर्स मस्ट बी कॉन्सिस्टेंट, देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन देयर बिहेवियर, कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए, एंड एनी डेवलपमेंट इन द कैरेक्टर हैज टू बी डन लॉजिकली, यू कैन अंडरस्टैंड इट. तो ये 4 पॉइंट्स उन्होंने बताया है. वन इज द कैरेक्टर मस्ट बी गुड, सेकेंड पॉइंट है कि कैरेक्टर मस्ट हैव अप्रोप्रिएटनेस, थर्ड पॉइंट है कि कैरेक्टर मस्ट हैव लाइकनेस, एंड फोर्थ पॉइंट है कैरेक्टर्स मस्ट बी consistent. Okay, so that is Aristotle's idea about characterization in general. He is not talking about only hero, but he talks about the characters in drama in general. Now he has also given a specific point of view with tragic hero. Tragedy का तो hero ही main है, तो hero को कैसा होना है? An ideal tragic hero. सॉरी, एन आइडियल ट्रेजिक हीरो, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना जरूरी है. तो चलो देखते हैं एरिस्टोटल ने क्या कहा. तो आइडियल ट्रेजिक हीरो, अगेन इन चैप्टर 15 एरिस्टोटल हैज टॉक्ड अबाउट दिस. तो उन्होंने कई सारे क्वालिटीज बताए. फर्स्ट क्वालिटी इज tragic hero should be an intermediate kind of person, which means that an extremely bad man or purely virtuous man cannot be tragic hero. ठीक है, टू एक्सट्रीम्स, वन इज टू गुड, अनदर इज टू बैड, बोथ आर नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रेजेडी. तो एक इंटरमीडिएट पर्सन होना है. इंटरमीडिएट पर्सन मीन्स बिटवीन गुड और बैड, नॉट टू गुड एंड नॉट टू बैड, एक मिडिल पोजिशन जिसके अंदर हाफ गुड है, हाफ बैड क्वालिटीज भी है. ठीक है, so a flawless blameless character cannot be dramatically effective. Yes, absolutely right. तो बेसिकली एरिस्टोटल का ये मानना था, जो बेन जॉनसन ने भी कहा, सॉरी सैमुअल जॉनसन ने भी कहा था कि दिस इज नॉट रियल. In reality, we cannot find such man or such woman who is totally virtuous or totally bad. तो हर पर्सन के अंदर ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि in each and every human beings there are combination of both the qualities, good and bad. Okay, but it is up to you that which qualities do you want to nurture more. जो वर्चुअस क्वालिटी ज्यादा नर्चर करता है वो ऑनेस्ट बन जाते हैं, एंड जो भी मतलब बुरे क्वालिटीज को ज्यादा नर्चर करते हैं वो विलेन बन जाते हैं, डिसऑनेस्ट बन जाते हैं. तो दोनों ही कॉम्बिनेशन, दोनों ही क्वालिटीज मिक्सअप होता है. एक ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली फ्लॉलेस नहीं हो सकता. ठीक है, याद करो पोप ने भी कहा था टू आर इज ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स मस्ट हैव फॉल्ट्स, अदरवाइज ही इज नॉट ह्यूमन. So human beings must have fault, which means that human beings must have some bad qualities also, which are common, which are common. तो ये दोनों ही चीजें हमारे अंदर है. तो tragedy should present that character who has both good and bad qualities, representing the reality. Okay, तो ये first point. Second point क्या है? We feel pity for those who, not wholly innocent, meets with suffering beyond expectation. Yes, absolutely right. So we feel pity for those persons who are in general good, but due to some minor faults, he or she is suffering a lot. We feel pity for them. We don't feel pity if we see see a terrorist is getting killed. We feel pleasure that okay, yes, it is good, he is extremely bad man, he is a terrorist, तो उनको मारना ही सही. But we feel bad if we find a character, an honest man, but somehow he has done something wrong, he has taken some wrong decision, and he suffering beyond expectation, like Dr. Foster. Dr. Foster was an excellent scholar, the best scholar of the world. We appreciate him so well, but he has done that particular decision was wrong in his life to study black magic. So we feel pity when Faustus is torn apart by Mephistopheles, because this is too much. This is too much. You are dying, and the death is also pathetic. The death is also very pathetic. God is not there to help you. So your body is just torn apart by a group of devils. Okay, so we feel pity for Faustus.
But if Faustus will be a hardcore villain, then we don't feel pity. We feel that okay, it is justified. He or she must face that kind of torture. तो इससे तो ट्रेजेडी नहीं बनेगा. इसलिए एरिस्टोटल कह रहा है कि we must create such a character, hero specifically. The tragic hero should be such who has both good qualities and bad qualities, a combination. Yes, nobleness having a tragic flaw, peripetia, reversal of fortune, and having a fate greater than. Yes, absolutely right, Cherry. Yes, to err is human, to forgive divine. Right. तो ये second point. थर्ड अच्छा सेकंड पॉइंट में ही वो बता रही है फियर कैन बी अराउज्ड व्हेन द नोबल सफरर इज अ मैन ऑफ नेचर लाइक आवरसेल्व्स. यस, तो जो मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी सी दैट मैकबेथ इज सफरिंग we feel afraid because why, because we think that Macbeth, he is a king, he is suffering in this way, so we are just flies. Okay, we तो हमारा क्या हाल होगा end. So that arises fear inside our mind. Yes, yes, Gitu, tragic flaw, FLAW, tragic flaw is known as hamartia. Yes, you are right. तो थर्ड पॉइंट क्या है, अ कंप्लीटली बैड मैन फॉलिंग फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, हाँ जो चेरी ने अभी बताया था, वुड merely satisfy our sense of justice. So it is not a tragedy in that sense. A completely bad man, ठीक है, a completely bad man, for example any minister, you know that he has done so many bad things, so when he faces death sentence, or he was given any punishment, you will feel good. Okay, so some yeah, you will feel that yes, justice is there. जस्टिस आज भी है, इसीलिए आज भी जो बुरे काम करते हैं उनको सजा मिलती है, तो चलो अच्छी बात है. तो उनको अगर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाए, आप टीवी में देख रहे हो, यू विल फील प्लेजर दैट यस, उनको इसी तरीके से मारना, राइट. तो ये ट्रेजेडी नहीं बनी. तो वही बात एरिस्टोटल कह रहा है, कंप्लीटली बैड मैन के लिए ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. तो कंप्लीटली बैड मैन को बाहर ही रहना है ट्रेजेडी से, ट्रेजिक हीरो से एक्चुअली. नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट है, ट्रेजिक हीरो ऑल्सो इंक्लूड सेंट्स, सॉरी also excludes saints from the domain of tragedy. Yes, saints can never be tragic heroes because they are too virtuous. His martyrdom is a spiritual victory, and the sense of moral triumph drowns the feeling of pity. There will be morality, didacticism, so there will not be pity. Yes, yes, absolutely. It will not serve, it will only serve poetic justice, but will not arise the sense of pity and fear. ओके, तो अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उन्होंने और भी कुछ पॉइंट्स बताया है. द हीरो मस्ट बी अ नोबल मैन लाइक अस, but is raised above the ordinary level by a deeper vein of feeling or heightened powers of intellect or will. Okay, so hero must be a noble man. For example, Faustus is just like us. ठीक है, तो हम में से भी बहुत सारे इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एंड इन दैट सेंस वेरी मच एक्टिव पर्सन होता है. बट फॉस्टस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. ठीक है, हम में से भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बट मार्लो ने क्या लिखा है कि फॉस्टस हैज मास्टर्ड ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, which is almost impossible for any human being. Very rare person can master each and every branch of knowledge. He is good at literature, he is good at maths, he is good at science, he is also good at economy, he is also good at history. तो totally सभी subjects में हम masters नहीं कर सकते, human beings नहीं कर सकते. कोई एक field में उनके mastery हो सकता है. बहुत ही रेयर ऐसे पर्सन है जो बहुत अच्छे पढ़ाई में भी है, बहुत अच्छे गाना गाते हैं, बहुत अच्छे डांस करते हैं, अ वेरी गुड पेंटर, ऑल्सो अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, एंड ऑल्सो अ ग्रेट मैन हु हेल्प्स अदर्स. वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो ये मतलब सुपरमैन हो. ठीक है, तो ऐसे सुपरमैन ही बनना है ट्रेजिक हीरो को अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, कि above the average level. Dr. Faustus is a scholar, yes, but he is an exceptional man. Okay, he has known everything, and only black magic is there which he doesn't know, so he wants to know more.
So Faustus is above the average level. He is an excellent Superman kind of person who has a lot of intellect, right? So that should be tragic hero, right? He must be well reputed. Yes, देखो फॉस्टस को ही याद करो. फॉस्टस का रेपुटेशन एकदम बिगिनिंग में एक्ट 1 सीन 1 में भी ये बताया गया है कि फॉस्टस इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड. थ्रू आउट द वर्ल्ड उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके एडमायरर्स हैं, सब लोग जानते हैं कि फॉस्टस, यस ही इज डॉक्टर, डॉक्टरेट फॉस्टस, occupying a position of lofty eminence in society. Yes, he must be respected by each and every people of society. ठीक है, तो ये उनका एक लाइन में डेफिनेशन था ट्रेजिक हीरो का, जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया. तो डेफिनेशन क्या है? ट्रेजिक हीरो शुड बी एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन. आई हैव सेड इट. अ मैन नॉट preeminently virtuous and just whose misfortune, however, is brought upon him not by vice or depravity but by some error of judgment. Yes, error of judgment, which Titu has just said, it is hamartia. और इसको हम कहते हैं ट्रेजिक फ्लॉ. तो हर कैरेक्टर के अंदर कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लॉ होना जरूरी है. तो यहां से याद कर लो, मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? ओवर एम्बिशन, राइट, ओवर एम्बिशन. ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? जेलसी और सस्पिशन, राइट. मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? प्रोकास्टिनेशन, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज हिज ट्रेजिक फ्लॉ. किंग लियर का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? hubris and also blind judgment, राइट. एंड ओवर एम्बिशन, ये डॉक्टर फॉस्टस का भी ट्रेजिक फ्लॉ, ठीक है. तो ओवरऑल ही इज एन एक्सेलेंट मैन, बट एक कैरेक्टर में मतलब कोई एक ब्लैक स्पॉट है, दैट इज हैमरशिया. तो एक एक ट्रेजेडी में एक एक हैमरशिया है, उसी के लिए वो अल्टीमेटली उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है. यस, तो दैट इज अबाउट. नेक्स्ट क्या है? मिसफॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो. हाँ, misfortune of a tragic hero must be brought out by some faults of his own, जो मैंने अभी बताया, that is hamartia. The term actually means missing the mark. hamartia का exact meaning है missing the mark, but Aristotle ने ये meaning दिया था error of judgment. It is not a moral state but a specific error which a man commits. ओके, मैंने आपको ये अभी बताया. अच्छा, hamartia तीन ways में आ सकता है. Hamartia may arise in three ways. What are the three ways? One is from the ignorance of some material fact or circumstance. Next क्या है? From a hasty view of a situation, or it may be voluntarily though not deliberately committed in a fit of passion. तीनों का ही मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. हाँ, यहाँ पर बताया गया है in Oedipus Rex all three possibilities are included. तो मैं तीनों के लिए तीनों अलग अलग एग्जाम्पल देती हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल एडिपस रेक्स के लिए अप्रोप्रिएट है कि फ्रॉम एन इग्नोरेंस, एडिपस को नहीं पता था कि ही हैज मैरिड हिज मदर एंड किल्ड हिज फादर. नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम ए हेस्टी व्यू ऑफ ए सिचुएशन. इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो मैकबेथ का कॉल्ड्रॉन सीन, कॉल्ड्रॉन सीन ऑफ मैकबेथ. तो कॉल्ड्रॉन सीन में विच ने जो बात बताया था कि you will not be killed until Barnamwood will come to Dunsinane. No man can kill you who is naturally born out of a woman's womb. So these are equivocal sentences. But Macbeth doesn't view the situation very closely. मैकबेथ ने इसको लॉजिकली नहीं समझा कि ये नहीं पॉसिबल है, विच मुझे गलत बता रहे. बट मैकबेथ ने बहुत हेस्टिली उनके मीनिंग्स को ले लिया कि हाँ चलो वो ये बता रहे तो आई विल बी इमॉर्टल. ही बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है. अच्छा, थर्ड क्या है? इट मे बी वॉलेंटरली दो नॉट डेलिबरेटली कमिटेड इन अ फीट ऑफ पैशन. मतलब ऑटोमेटिक कोई अचानक कोई एक पर्सन को मर्डर करना. टेक एन एग्जांपल ऑफ द ज़ू स्टोरी. द ज़ू स्टोरी, ज़ू स्टोरी में क्या हो रहा है? पीटर एंड जेरी, टू कैरेक्टर्स, आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास ऑफ एब्सर्ड ड्रामा. तो
अचानक क्या हो रहा है कि जेरी किल्स हिमसेल्फ थ्रू द हैंड ऑफ पीटर। तो ये इट मे बी इन इट इज अ वॉलेंटरी एक्शन। जेरी खुद ही अपने आप को मार रहे हैं, जेरी इज कमिटिंग सुइसाइड, बट इट इज जस्ट कमिटेड इन अ फीट ऑफ पैशन। ठीक है, जेरी feels so much intolerance due to his life, and suddenly he puts the knife into his belly through the hand of Peter। तो ये क्या है, ये वॉलेंटरी तो है बट एक मोमेंट में हो जा रहा है, विदाउट सॉरी विद इन अ फ्यू सेकेंड्स इट इज कमिटेड। तो एरिस्टोटल ने ये बताया है कि इडिपस रेक्स में ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर इंक्लूडेड। यस, जेरी डेलिबरेटली डू इट, यस, एंड इन अ हीट ऑफ पैशन। अच्छा, इसी एग्जांपल को एक बार बता दो, इडिपस रेक्स में कैसे इन तीनों इन्वॉल्व। इडिपस रेक्स का ही एग्जांपल ले लो। फर्स्ट मैंने आपको बताया फ्रॉम द इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम ए हेस्टी व्यू ऑफ ए सिचुएशन। हेस्टी व्यू ऑफ ए सिचुएशन मींस कि इडिपस कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग when the country was infected with plague। Oedipus is viewing it hastily। And last क्या है, when Oedipus kills Laius, his own father, it is just committed in a fit of passion। They are just talking, Oedipus goes hyper and Oedipus kills the man। ठीक है, तो ये होता है एक गुड ट्रेजेडी। यस, रिटन बाय एडवर्ड एल्वी राइट। अच्छा, अब आते हैं कैथारसिस के बारे में, जो मैंने एकदम फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। पीटी, फियर, जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कैथारसिस। तो कैथारसिस मीन्स पार्गेशन ऑफ इमोशंस। Basically, it talks about an effect of tragedy on the audience। An effect of tragedy on the audience। The term was actually used in medical field to get rid of poisoned blood or menstrual blood from the patient's body। तो एक मेडिकल प्रोसेस है, ठीक है, कि जो भी मतलब आपके ब्लड पॉइजनिंग हो गया है, तो वो टोटली ब्लड में जा ना सके, इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो उसी जगह का पॉइजन ब्लड को रिमूव कर देता है। ठीक है, दैट इज कैथारसिस। तो एक पर्गेशन हो गया एंड योर ब्लड विल बी प्यूरिफाइड अगेन। तो ट्रेजेडी में इसका क्या मीनिंग है, इट कन्वर्ट्स एक्सेसिव इमोशंस टू वर्चुअस डिस्पोजिशन। एक्सेसिव इमोशन वो आपका बाहर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीटी एंड फियर। ठीक है, तो चैप्टर वाइज डिवीजन एक बार देख लो। टोटल कितने चैप्टर्स है, टोटल 26 चैप्टर्स है। तो कौन से चैप्टर में क्या क्या है, 1 to 5 में है क्लासिफिकेशन ऑफ पोएट्री। 6 to 19 में टोटल ट्रेजेडी का जो थ्योरी मैंने बताया वो है। 20 to 22 में पोएटिक स्टाइल के बारे में उन्होंने बताया है। 23 is on narrative poetry। 24 is on epics। 25 is on critics objection against poetry। and last है epic versus tragedy। okay, so this is the chapter wise division of poetics। okay, so we have completed the major concepts of poetics। That is the end of today's class। Thank you all for joining। This is the link of my telegram channel। The link is also given in the description box। So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes। So we will meet again tomorrow at 8:30 p.m। So don't forget to join me live। Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification। Okay, so thank you all। Bye bye everyone। Good night। See you all tomorrow at 8:30 p.m.